Bismillahirrahmanirrahim. My dear student of second year class, we will move on the next lecture of the gastrointestinal tract after delivering the histology of tongue. Now, ये आप सब जानते हैं कि ओरल कैविटी में जो फर्स्ट एनकाउंटर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का या पैथोजेंस का या इनकमिंग इंजूरियस पार्टिकल्स, वो सबसे पहले जो है वो ओरल कैविटी है। अब अल्लाह ताला करीम ने ओरल कैविटी को इस सिस्टम के तहत डेवलप किया है ताकि इनिशियली कोई भी ऐसी इंजूरियस पार्टिकल या पैथोजेंस जो कि हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं हैं, उनको पहले ही एनकाउंटर किया जाए ताकि उनको फर्दर प्रोपिगेट टू द जीआईटी जाने ही ना दिया जाए। फॉर दिस द नेचर हैज़ प्रोवाइडेड, अल्लाह करीम ने एक रिंग बनाया है लिम्फेटिक टिश्यू का इन द ओरल कैविटी कि कोई भी ऐसा इंजूरियस मटेरियल सबसे पहले जो है इन लिम्फेटिक टिश्यू से गुजरे ताकि प्रॉपर इम्यूनिटी डेवलप हो, प्रॉपर एनगल्फिंग हो, प्रॉपर डिस्ट्रक्शन हो जाए जो इनकमिंग पार्टिकल्स हैं, ताकि वो लेस लीथल लोकल बोलस जो है वो टुवर्ड द जीआईटी दैट इज एसोफेगस स्टमक पहुँचे। तो इसके लिए हम उसको स्पेशल नेम देते हैं waldyres रिंग ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू। जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, it is the waldyre ring of lymphatic tissue. It is a ring, circular ring of lymphatic tissue surrounding the oral cavity as well as the oropharynx, the nasopharynx and laryngopharynx. All will be, these are the two passages, that is the nasopharynx and oral pharynx, respiratory passage and the GIT passage, जहाँ से इनकमिंग मटेरियल जो है वो दोनों तरफ जा सकता है। तो इसलिए अल्लाह करीम ने फिर उन दोनों रीजन्स के ऊपर जीआईटी और रेस्पिरेटरी पे ये वाल्डी रिंग बनाया है। सो द वाल्डी रिंग इज अ लिम्फेटिक टिश्यू दैट सराउंड द ओपनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी एडवाइज जीआईटी। इट इज अ सॉर्ट ऑफ अ रिंग। द लेटर पार्ट ऑफ दिस रिंग इज फॉर्म बाय द पैलेट एंड टॉन्सिल। तो आप सब ने जानते हैं जो टॉन्सिल्स हैं वो उसके लेटरल वॉल पे ओरल फेरिंक्स पे पड़े हुए हैं, प्लेटोग्लॉसल एंड प्लेटोफ्रेंजियल आर्चेस के दरमियान और पोस्टीरियर टू द टंग। जो मेजर lymphatic collections or aggregations of palatine tonsils. So it formed the lateral boundary of the ring. Then the tubal tonsil, ये again a cube lymphatic tissue aggregation है, collection है, but it is in the nasopharynx. Posterior to the nasal coining, उसके posterior in the lateral wall. इन द लेटरल वॉल जहाँ पे आउटरी ट्यूब की ओपनिंग होती है, जो आउटरी ट्यूब जो ओपन करती है इन द नेसोफेरिंग लेटरल वॉल पे, उसको सराउंड करते हैं टॉन्सिल। कौन से? ट्यूबल टॉन्सिल। दैट इज व्हाई इट इज नेम फ्रेंजियल ट्यूब, नेसोस्टेचियन ट्यूब। सो ट्यूबल टॉन्सिल दैट विल सराउंड द लेटरल पार्ट अराउंड द ओपनिंग आउटरी ट्यूब इन द लेटरल वॉल ऑफ द नेज़ल। सो ये लेटरल पार्ट जो है इट इज फॉर्म बाय पैलेटल टॉन्सिल एंड ट्यूबल टॉन्सिल। Then is the anteroposterior. Posterior is the pharyngeal tonsil, the posterior wall of the pharynx, just opposite posteriorly to the nasopharynx. There is again a collection of a pharyngeal tonsil, also called as adenoids. Also called as a adenoid. ये बड़ा important line of defense है for of the below puberty, or it is from the childhood. It is from the major portion of the pharyngeal tonsil in the childhood. बच्चों में, children में, it is very commonly involved in the pathogenesis of the various incoming pathogenic material, and they become swollen up. So it is called as adenoids. Then is the lingual tonsils anteriorly, the posterior surface of the tongue, posterior to the sulcus terminalis. Aggregation of the scattered lymphocyte is called as lingual tonsil. So posterior part of the tongue, so it forms the anterior boundary of that ring. So consider this, laterally is the tubal tonsil and palatine tonsil in the lateral wall, and the tubal tonsil form the lateral boundary of the nasopharynx.
whereas the palatine tonsil oropharynx. Posterior is the adenoids, and the anteriorly is the posterior part of the tongue, that is the pharyngeal tonsil. That is the lingual tonsil, not pharyngeal, it is the lingual tonsil posterior to the sulcus terminalis. Now, this is a diagrammatic presentation of this description. Now, this is the pharyngeal tonsils, also called as the adenoids, upper midline in the nasopharynx. Then tubal tonsil on both sides, tubal tonsil on the both sides. Then is the lingual tonsil anteriorly. Then is the palatine tonsil. So palatine tonsil, pharyngeal tonsil, lingual tonsil, tubal tonsil form a ring. So जब भी कोई इनकमिंग पैथोजन है वो इनसे बच नहीं सकेगा. It will already necessarily has to encounter. It has to be necessarily be encountered by all the lymphatic aggregation. So they will be properly destroy them, or they produce the immunity against them. The tubal tonsil, palatine tonsil laterally, posteriorly pharyngeal tonsil, anterior the lingual tonsil. Now again the waldyres description and diagrammatic presentation. So this is again a tubal tonsil. Then is the tubal tonsil on both sides, pharyngeal tonsil adenoid, lingual tonsil, palatine tonsil. Either side of the pharynx, around opening of it, upper midline of the pharynx, under mucosa of the posterior third floor tongue. So these are the areas from where it gets be involved in any type of interruption of the incoming pathogens. Now this is the area of drainage, how these lymphatic aggregation drain to the systemic lymphatic system. So this is the adenoid, so posterior pharyngeal tonsil. This will drain in the retropharyngeal nodes. Retropharyngeal node. No, this is the neuropharyngeal tubal tonsil. They will drain into the jugulodigastric. Look at the picture. Jugulodigastric will drain this adenoids, this tubal tonsil. Adenoid retropharyngeal node. Palatine tonsil along with the lingual tonsil, they will drain into the submandibular lymph node, ultimately into the jugular chain of the lymph node. Now, anterior part of the lingual tonsil, they will also drain into submental nodes. So, anterior part of the tongue as well as the palatine tonsil, they also drain into the jugular chain of the lymph node, jugulodigastric, whereas they also drain into the submandibular lymph node along with the submental nodes. Whereas the tubal tonsil, they will drain into the jugulodigastric, whereas the adenoid, they drain into the retropharyngeal nodes. So this is the area of drainage of these particular waldyres rings. Adenoid, retropharyngeal, tubal tonsil, jugulodigastric, whereas palatine tonsil and lingual tonsil, the jugulodigastric, submandibular and submental lymph nodes. What are the functions these perform? So these lymphoid aggregations surround the gate of the respiratory and GIT. ये मैंने पहले बता दिया. ये पहला गेट है जिसे इन पैथोजेंस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इंजूरियस पार्टिकल को एनकाउंटर करेगा. ये पहला गेट है. सच अरेंजमेंट मेंट फॉर द काउंटर एक्शन अगेंस्ट पैथोजन. इस तरह का जो इंतज़ाम किया है नेचर ने या अल्लाह ताला ने, डेफिनेटली अल्लाह ताला ने अरेंज किया है. तो इसको पहला एनकाउंटर है जो कि इनकमिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए. प्रोडक्शन ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट, ऑब्वियसली जब डिसेंसिटाइज होंगे दे प्रोड्यूस बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट. ड्रेनेज टू द रेस्पेक्टिव lymph node, so properly they will convey all types of the mediation of immunity as well as sensitized T lymphocytes through respective lymph node drainage. Now this is the clinical aspect, very well known entity tonsillitis. ये सबसे पहले जो टीन एज हैं, below 10 हैं, between 15 हैं, तो tonsillitis is very common presentation because usually यही एज है जिसमें हम खाने पीने में थोड़ी सी लापरवाही करते हैं. जब लापरवाही करते हैं, all types of the incoming pathogens they freely available in the mucosa. जब वो होंगे तो palatine tonsil they get suffered. सबसे पहले जो है palatine tonsil उसको एनकाउंटर करेगा.
वो खुद तो स्वोलन हो जाएगा इन्फेक्टेड, लेकिन वो ड्रेन करके सारे पैथोजन को एंगल्फ करेगा और इन्फ्लेम हो जाएगा, और उस तरीके से उसको डिस्ट्रॉय करके इम्यूनिटी मीडिएट करेगा। लुक एट द हाइपरीमिया, कंजेशन हुई पड़ी है सारे ओरल म्यूकोजा की, lymph जो tonsillitis and the lymph node, they become swollen up. There is the patchy suppuration as well, pus बनी हुई है. So this is the two picture of a palatine tonsil. They become painful, they block the oropharynx, so they also produce fever. So but they are the line of defense. Look at the adenoid. So these are commonly below 10 children में ये posterior जो पार्ट ऑफ दी ओरोफेरिंग्स है या नेजोफेरिंग्स है उसमें होता है. लुक एट द पिक्चर ऑफ ए एडिनॉइड फेस. व्हाट इज दैट? पफी फेस, oral cavity open, there is a breach in the tongue, a breach in the teeth, so sunken eyes, narrow pinched nostrils, protrude teeth, dull face, then the everted upper lip, rhinorrhea, loss of nasal labial. So this is a typical picture of an adenoid face. This is the adenoid location. There is the posterior pharyngeal wall opposite to the oropharynx on the posterior pharyngeal wall. This gets swollen up and ultimately they block the nasopharynx. जब nasopharynx block होगा तो breathing will become oral. Breathing will become oral. That is why the opening mouth, the upper lip become everted, the mouth become open, sunken eyes. So this is a typical picture of an adenoid. Now inshallah next lecture we will proceed on the histology of pharynx. Thank you very much.